Assalamu alaikum. My name is Engineer Qasim Khan and currently I am working as Sales and Services Engineer at Sheikh Associates and Suppliers Rawalpindi. We are going to start a lecture series on tender. This series will include process of tender from its publication to product delivery. The first topic in this series is what is bid. Bid basically एक ऑफर होती है जो कोई भी बायर, जो कि कोई फर्म हो सकता है या कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, जो कि वो कोई ऑफ़र देता है उसे हम बिड बोलते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वो अपने इक्विपमेंट के लिए बिड देता है, उसे जो इक्विपमेंट चाहिए होता है उसके लिए वो बिड देता है। इसी तरीके से कोई स्कूल है तो वो अपने फर्नीचर के लिए बिड देता है, अपने स्टेशंस के लिए बिड देता है। इसी तरीके से कोई और इदारा है, कोई मिलिट्री का इदारा है तो वो अपने डिफेंस के जो आलात हैं उनके लिए जो है वो बिड देता है। बिड को अगर आप आसान ज़बान में समझना चाहें तो ये बेसिकली एक ये बोली की तरह होती है जिसमें जो बायर है वो बोली लगाता है। बिड का प्रोसेस काम करता है बिड एंड आस्क के प्रिंसिपल पर। सो व्हाट इज़ बिड एंड आस्क प्रिंसिपल? बिड इज़ अ प्राइस एट विच बायर्स आर विलिंग टू बाय एंड आस्क इज़ द प्राइस एट विच सेलर्स आर विलिंग टू सेल. In bid and ask procedure, a buyer offer a price according to its capacity to the seller, and seller ask him to increase the price according to the market value of the product. So concluding the bid, we can say that bid is actually an announcement by the buyer in which he tells the price of an equipment, a service, or a good according to its capacity.